In this video, we will discuss about the laws related to gases. So, in the previous video, we have discussed about the matter. Now, we will discuss about the laws related to gases. So, the behavior inside the behavior of gases toward pressure, volume, temperature, and molar amount is generally governed by the following laws. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बिहेवियर ऑफ गैसेस का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोलर अमाउंट, यानी कि अगर हम किसी गैस के ऊपर या गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे या वॉल्यूम कम करेंगे, प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर जो है उसको चेंज करेंगे और मोलर जो अमाउंट है यानी नंबर ऑफ मोल्स उसको चेंज करेंगे, तो फिर गैसेस का जो बिहेवियर होगा वो इस सूरत में क्या होगा। तो इसके बारे में मुख्तलिफ लॉज हैं। तो द फर्स्ट वन इज बॉयल लॉ। First one is Boyle law. So, in 1662, Robert Boyle described the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature. 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने यानी जो है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में, यानी गैस का जो वॉल्यूम है और उसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उसके दरमियान में एक जो है उन्हें रिलेशनशिप जो है ना मालूम किया, बयान किया, डिस्क्राइब किया। तो लेकिन उस सूरत में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और फिर जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम और यानी इस वॉल्यूम और प्रेशर में वो क्या रहेगा। तो सो बॉयल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। नाउ he observed that volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied, provided the temperature remains constant. उसने बताया that the volume of a given mass of a gas, कि हमें एक जो है मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक गैस है, इस यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, ये सील्ड है, तो इसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो अब बॉयल ये कहता है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, ये वॉल्यूम है, दिस वन, ये वॉल्यूम ऑफ ए गैस है, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रेशर अप्लाइड, यानी ये जो प्रेशर हम इसके ऊपर डालेंगे, इस वॉल्यूम के ऊपर, ये जो वॉल्यूम है इस प्रेशर को हम डालेंगे, तो और अगर हम टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखें, तो उस सूरत में उसने कह दिया कि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी अगर हम प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर जो है बढ़ाएंगे इस गैस के कंटेनर के ऊपर, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी ये पिस्टन जो है ना जाएगा नीचे, तो इस सूरत में गैस कंप्रेस होगा और वॉल्यूम कम होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको करें कि प्रेशर हमने उसको अप्लाई कर दिया इस कंटेनर के ऊपर, तो ये जो प्रेशर है इसको प्रेशर को डाउन करेगा और डाउन करने से गैस कंप्रेस होगा और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी ये
लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल ने ये कह दिया कि द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure. The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. Applied provided the temperature remain constant. अगर टेम्परेचर हमारे पास ये टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो तो उस वक्त में वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को वो यूज करेगा इस तरह का। तो ये उसने जो ना बता दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to Boyle law, volume of a given mass of a gas increases with increase in pressure and vice versa. So he said that volume of a given mass of a gas decreases with the increase in pressures and vice versa. यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर वॉल्यूम जिस तरह हमने डिस्कस किया तो ये कम होगा, वॉल्यूम ये गैस यानी कम होगा। Mathematically, while written is law such as that this I can say that volume will be inversely proportional to pressure. So this one pressure, this is volume, this is pressure. So Boyle says that volume is inversely proportional to pressures. And if we another equation, the same equation will be written as V is equal to kV into 1 by V. So this is a constant. This is a constant. Kv is a constant, and if we move this V towards this side, then we will be right here that PV is equal to Kb. So this is the Boyle equation, where Kb is called constant for Boyle law. This Kb is a constant for Boyle law. Now, when the volume of a given mass of a gas is changed from V1 to V2 and the pressure is changed from P1 to V2, then Boyle law equation can be written as this will say that V1 you can say V1 is equal to Kb at constant temperature. So this is, if we zoom in same, we will see that V1 is equal to V2 is equal to Kb at constant temperature. So P1 is the initial pressure, V1 is the initial volume, P2 is the final pressure, and V2 is the final volume. Now, we can say that V1 is equal to P2, V2, that will be equal to Kb. So, according to the above equation, the Boyle law can also be defined as the product of pressure and volume of a given mass of a gas remain constant provided the temperature is constant. So, according to let's say this equation, this one, Boyle
you find the equation such as the product of a pressure and volume. This is a product of pressure and volume. This one is a product of pressure and volume of a given mass of a gas remain constant provided uh, provided temperature is constant. So उसने बॉयल ने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो ये जो ना बॉयल ने इसको डिस्क्राइब किया। नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ। एक्सपेरिमेंट के जरिए से हम बॉयल लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जो उसने बात करी है कि वॉल्यूम इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर if temperature is constant। इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से how we will verify the same experiment। तो the apparatus used for the experimental verification of Boyle law which is shown below in the figure, this one. So this one, you say a certain mass of a given gas is enclosed in a cylinder. So this is a, you can say this is a cylinder. This is cylinder, and certain gas is here. This is a gas which is kept in this cylinder. It's a whole cylinder. So he said that a certain mass of a gas is enclosed in a cylinder. This cylinder, the volume of a gas is changed. The volume of a gas is changed by increasing and decreasing the pressure. So here you can say that the pressure is increased. Pressure is increased. You can say that it's increased. The volume at various pressure is noted. In each case, the product of pressure and volume remain constant at constant temperature and is found according to the Boyle law. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस है और यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है। यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पर जाके कम हुआ है। अगर हम समझे कि ये हाफ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रेशर है इसको यानी प्रेशर अगर ये यहाँ पर है, यहाँ तक है शुरू हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम चले जाए तो ये यहाँ पे इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, दिस प्रेशर, ये प्रेशर इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ये जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो V1 है is this one, or we can say that this if we say that this is volume V1, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम V2 है, यानी ये वॉल्यूम यहाँ पे हाफ हुआ है। प्रेशर अगर हम कहें ये प्रेशर यहाँ पर P1 है और यहाँ पर ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है ये P2 प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो अब गेज को अगर हम देखें
गेज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो गेज में जो है ना टेम्परेचर, गेज में जो टेम्परेचर है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये वाला दिस इज जैसे गेज यहाँ पे ये वाला जो टेम्परेचर ये कांस्टेंट है और यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है 300। अब जहाँ पर यानी प्रेशर वन वन शो कर रहा है, ये वन प्रेशर वन है, यहाँ पर प्रेशर ये जो है यहाँ पर टू टू शो कर रहा है, ये टू है, यानी कि प्रेशर वन से प्रेशर जो है P1 इज इक्वल टू वन और P2 इज इक्वल टू टू। प्रेशर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम वन टू टू, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि T1 और ये से कांस्टेंट 300 डिग्री सेल्सियस में से दैट्स डिग्री डिग्री जो है ना कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम यहाँ पर if you say that here volume is 2 liter and you can say V2 is equal to 1 liter, तो वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज हुआ है, यानी you can also write this in the same way that if you can say that this is P2 and this is P1, pressure is तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो है ना ये इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर यानी वन से दो पे चला गया और वॉल्यूम जो है ना ये डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो इसके का जो प्रोडक्ट है P1 V1, so we'll say that P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to KB। यहाँ पर ये बॉयल लॉ साबित करता है कि P1 is equal to P2 V2 because this one is volume is decreased by applying the pressure or increase the pressure, and P2 is decreased from increased from P2 is increased pressure is increased from 1 to 2. So this just justify the Boyle law in this way. So this is the experimental verification of Boyle law. अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे ग्राफिक का representation of Boyle law, graphic representation of Boyle law दिया हुआ है। So if we increase the pressure, the volume will be reduced. You can say this inverse proportional is this one. Temperature is constant. So this is the graph show the Boyle law that if you increase the pressure, the volume will be decreased, or you can say that if the volume is increased, the pressure will be decreased. So because here at this point, if you consider it, this is 0 and this is 10, and you can say this is also
for example 10. So at zero stage, we have seen, so here we are going to increase the pressure, and if we are going to at zero, we have this volume, see this volume is the maximum volume, and if we are going to increase the pressure, so this one, then we see that the volume decreases. This is volume which is decreases gradually because we are increasing our pressure. We are increasing our pressure, this one, and the volume gradually decreases because we are increasing the pressure. So this is the graphic representation of Boyle law. Here you can say that diagrammatic representation of Boyle law can be diagrammatically represented is here we are given a pressure 1, this is a pressure 2, this is a pressure 3, this is a pressure 4, this is volume 1, 2, 3, and 4. So, and here is a constant of pressures according to Boyle law and decrease in pressures. So here we see that if we decrease the pressure from P1 to P2, P3, volume will be increased. यहाँ पर प्रेशर को कम किया जा रहा है, ये प्रेशर जो है ना ये डिक्रीज हो रहा है इस तरह, क्योंकि पी का जो निशान है ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो ये कम होता जा रहा है. यहाँ पर पी जो है ना पी सैम्पल पी size gradually decreases, which represent that pressure is decreases. And here, if we are going to decrease the pressure, the volume sample is going to increase. So this sample of V increases. This is this one. This is this one. It means that by decreasing the pressures, we are going to increase the volume. Or we can say by if we see in this case that if we are going to increase the pressure, then we will also see that we are going to decrease the volume. So if we are going to decrease the pressures, the increase in volume will occur, provided the temperature is constant. Also the diagrammatical representation of Boyle law. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. This is the example which states that a 530 decimeter cube sample of hydrogen gas was collected in a container at 800 mm of mercury pressure at room temperature. What volume will the gas occupy at 400 mm of mercury? तो जहाँ पर यानी कहा गया है कि हमारे पास एक कंटेनर है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, दिस वन, ये कंटेनर है. तो इसमें हमारे पास गैस है, किस चीज़ का, ये हाइड्रोजन गैस. तो अब इसके ऊपर जो प्रेशर है, यानी ये जो प्रेशर है इस कंटेनर के ऊपर, ये है 800 mm ऑफ 800 mm ऑफ मरकरी.
तो 8 mm ऑफ मर्करी जो प्रेशर है इस कंटेनर के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि प्रेशर इसके ऊपर 8 mm मर्करी है एट रूम टेम्परेचर। ये पहले कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 mm ऑफ मर्करी। यानी अगर हम प्रेशर को कम करें इसको, यानी अगर हम यहाँ पर इस कंटेनर को ऊपर प्रेशर कम करें, इसको हम यानी यहाँ की बजाय यहाँ तक लें, इस ये प्रेशर है ये वाला, यानी अब ये 800 था, अब ये अगर हम 400 पे करें तो 400 पे 400 mm, ये बेसिकली हमने प्रेशर को 800 से 400 पे ले, यानी कि हाफ कर दिया। तो अब ये जो वॉल्यूम था गैस का, ये अब कितना होगा, कितना ऑक्यूपाई करेगा। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 530 डेसीमीटर क्यूब पर लीटर, 530 लीटर और 530 डेसीमीटर क्यूब। और जो V2 है, ये वॉल्यूम कितना रहेगा, ये हमारे पास अननोन है। तो अगर हम, यानी ये हमारे पास 530 लीटर वॉल्यूम में इसके ऊपर 800 mm ऑफ प्रेशर, मर्करी प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। अगर हम इस प्रेशर को कम करके, यानी यहाँ पर ये देखें, ऐसे यहाँ से कम हुआ है, यहाँ तक ये कम हुआ है, तो ये कितना वॉल्यूम पर रहेगा, तो इसको हमने समझना है। You will know about this. So V1 is 530 decimeter cube per liter, and P1 is 800 mm of mercury, and P2 is 400 of, so this one, this container, 400 mm of water. So what will be the volume V2, which is this one? So we will determine this by according to Boyle law. So this is the Boyle law, which says that V1 is equal to V2. Now we are going to determine the V2. So we can write in this case like this. So V2 is equal to, that is this one. It will V1 you can write say that you can write in the same way. V2 is equal to V1. So we need this volume, this one. So we can write, and this one, this P will move in the denominator. So we can say that we can write that V2 is equal to V1 divided by P2, which is this one. So this one, V2 is equal to V1 divided by P2. Now we have P1, this one, we have P1 arrow 800 mm of mercury. So we can put it here, and V1. So V1 is 530 decimeter cube, which is this one. So this one, you can say this one, and divided by P2. This one, you can say this one. So P2 is equal to 400 mm of mercury. 400 mm of mercury. So here this unit mm of mercury, you can say mm of mercury, and mm of mercury will be cancelled. So mm will be cancelled.
and we by multiplication and division of the figures, so we will get a unit of decimeter cube per liter. So we will get this result 1060 decimeter cube or liter. We can say V2 is equal to 1060 liter or decimeter cube. So we have 1060 liter. So in this case, here the volume in this container, the volume will be 1060 liter. So this shows that we have initial volume 530 liter, 530 liter for hydrogen gas, and we have pressure of 800 of mercury. If we have decreased the pressure up to 400 mm instead of 800 mm, so we got volume of 1060 liter instead of 530. So it proves that by decreasing the pressure from 800 to 400, we will increase the volume from 530 to 1060. So we will increase, get more volume, this one. So by decreasing the pressure, we are going to increase the volume. So therefore, Google says that volume is inversely proportional to pressure if temperature is constant. So this is the example of Boyle law. So now we'll discuss about the Charles law. Charles law. Previously we discussed Boyle law. Now let's come to Charles law. In 1787, Jacques Charles gave a relationship between volume and temperature of a gas at constant pressure and formulated a law known as Charles law. This law states the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at a constant pressure. So, Charles' law give a relationship between volume and temperature. Volume and temperature. So, with Boyle give the relationship between pressure and volume, while Charles give the relationship between volume and temperature. So, at a constant pressure. So, according to Charles' law, the volume of a given mass of a gas. So this one, the volume of a given mass of a gas is directly proportional. So we can say directly proportional to the absolute temperature, to this temperature at a constant pressure. That at a constant pressure, the volume of a gas will be directly proportional to temperature. This is the चार्ल्स लॉ यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा यानी कि अगर हम वॉल्यूम को यानी टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर वॉल्यूम भी कम होगा। जबकि बॉयल केस में बॉयल लॉ में ये था कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम
कम होगा, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। शर्त ये कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। नाउ ये यहाँ पर मैथमेटिकली द लॉ can be expressed as this: the volume is directly proportional to pressure because of pressures. We can say that uh, this one, the volume is directly proportional to KCT. This you can write that volume will be equal to KT. So if you see, we can see, right, so it's the Charles constant. This is the equation of Charles law. It is written also here. So this one is equal to KCT. And we can write in this way also: V by T is equal to Kc. Where Kc is Kc is called constant of Charles law. We have written C, and this C represent Charles constant. K is a constant, and C represents Charles constant. So this is Charles constant, Charles law constant. So this is the equation of Charles law. So when the volume is changed from V1 to V2 by changing the temperature from T1 to T2, then the relationship can be written in the following form. Here you can say that here is written that V1 by T1 is equal to V2 by T2. You can also write down this one, which is this equation, this one. So you can say here if we change volume from V1 to V2 by changing the temperature from T1 to T2. So if we change this volume from V1 to from V1 and temperature T1 to volume V2 and temperature T2, and it will also be equal to Charles law constant. So here T1, this is T1. So T1 is initial temperature. T2, which is this one. This is the final temperature. V1 is the initial volume, which is this one, and V2 is a final volume, which is this one. So from the above equation, is this one, I can say this one, it's the same. The Charles law can be defined as the ratio between volume and the absolute temperature of the given mass of a gas is constant and constant pressure. So Charles said that the ratio between volume and absolute temperature. This is the ratio between volume and absolute temperatures of
figure mass of a gas is constant pressure. This is constant pressure. Now, experimental verification of Charles' law. The apparatus used for the experimental verification of Charles' law consists of a cylinder. The cylinder has a piston. The wall of the cylinder are heat or insulated while the base of the cylinder is heat conductor. When the cylinder is heated at a constant pressure, the piston move upward and the volume will increase. It is noted from the various observations that the ratio between volume and absolute temperature remain constant. This verify the Charles law. So एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ ये कहते हैं कि एक अपैरेटस को हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर में एक पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, उसमें पिस्टन होगा। तो वाल ऑफ सिलेंडर जो होंगे वो हीट इंसुलेटर होंगे, यानी कि उसमें से हीट पास नहीं होगा जो इसके सिलेंडर के जो वाल होंगे। तो जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर यहाँ पे अगर हम देख लें नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये वाला। तो इसकी जो साइड है ये इंसुलेटेड है और बल्कि जो इसका जो बेस है इसको हम गर्म करेंगे। तो इसमें हमारा वॉल्यूम V1 रखा हुआ है गैस का, और यहाँ पर जो है V2 है। तो यहाँ पर ये हमने रखा हुआ है इसमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन दिस सिलेंडर। तो अगर हम ये टेम्परेचर जो है ये हम गर्म करेंगे इस सिलेंडर को, तो गर्म करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है ना ये इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से फिर क्या होगा, ये वाली हालत में आएगा। यहाँ पे हमने हीटअप कर रहे हैं तो काफ़ी हीटअप करने से फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर इसका प्रेशर जो है ना, वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम भी इसका, यानी ये पहले ये वॉल्यूम था इसका, ये वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। अब ये इसके अंदर गैस है, ये देखिए ना यहाँ से वॉल्यूम बढ़ गया, पहले ये था अब ये काफ़ी बढ़ गया है। तो गर्म करने से जो है ना ये वॉल्यूम बढ़ गया है। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया गया है तो ये वॉल्यूम, ये कम वॉल्यूम था पहले इसका, ये वॉल्यूम था, जब टेम्परेचर बढ़ा तो फिर ये वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ये चार्ल्स लॉ भी कहता है, लेकिन इस तरह पर प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ Boyle of Charles law. So the cylinder has a piston. The wall of the cylinder are heat insulator, while the base of the cylinder is heat conductor. When the cylinder is heated at a constant pressure, the piston move upward, and the volume will increase. It is noted from the various observations that the ratio between volume and absolute temperature remain constant. This verify the Charles law. So this is the verification of Charles law. Experimental verification of Charles law, this experiment. Now this is the graphical
a presentation of Charles law. If the value of volume is plotted against temperature, the straight line is obtained which show that volume is directly proportional to temperature. So here you can say that this is the temperature, this is the temperature, this is the temperature, this is the volume. So if we have temperature, for example, this is a point, this is a point of 0 point, and here you can say this is a 100 degree uh, Celsius, for example, and this is the volume. So at this temperature, the volume will be this one. This one. So if you're going to increase the temperature, then at this point the volume will be this one, this one. And at this point, यानी अगर हम इसको बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, तो इस पॉइंट पे ये जो वॉल्यूम होगा वो ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मजीद हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री पे आ गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर वॉल्यूम इस पोजीशन पे आएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो फिर अगर हम मजीद आगे जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाने से ये यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। फिर फाइनली जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो प्रेशर यहाँ तक बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ाते, टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ाते तो हमारा वॉल्यूम ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये देखिए ना, ये वॉल्यूम ये बढ़ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। तो लिहाजा ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, प्रोवाइडेड रेट ऑफ pressure is kept constant, pressure को अगर हम constant रखें, constant रखें। So this is the graphic representation of Charles law. यहाँ पर भी दिखाया गया है कि the increase in volume, this is if you're going to increase the volume, the temperature will also increases। यहाँ पर भी अगर हम बताया गया है कि डायग्रामेटिकली कि अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास जो है ये क्या होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कि ना ये वी जो है छोटा है, आगे V2 बढ़ाए, फिर मजीद बढ़ाए, फिर उससे बढ़ाए, तो यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो by increasing the temperature the volume will be increased, which is according to Charles law. So this is the diagrammatical representation of Charles law. Now let's come towards an example of Charles law. This example, if 3 decimeter cube of air is heated up from 300 Kelvin to 400 Kelvin at constant pressure, then what will be the volume of the gas at higher temperature? So here we have if 3 decimeter cube of air, we have an air of volume, so this one 3 decimeter cube is heated. For example, we have air, so which is 3 decimeter cube air,
this is V1 volume. If it is heated down from 300 to 400 Kelvin, so this temperature, this is 300 degree Kelvin. If it is heated down from 300 to 400, this is 400 degree Kelvin. So obviously the volume will be increased. The volume will be increased, and this is V2, and we are going to determine. So we are going to determine this one, and the temperature T2 is 400 degree Kelvin. So how we will determine the final volume? So according to Charle's law, we have equation that V1 by T1 is equal to V2 by T2, and we are going to determine this one, V2. So V2 will be equal to V1 V1 T1. So this one is say that V1 by T1 is equal to V2 by T2, and V2 is equal to V1 by T1 into T2. So we can write this one, this like this, to V2 T2. So we are going to determine this one. So V2 we will equal to V1 T1 into T2. So this will move here. So now we have V1 300 3 liter, which is you can say which is this one, so V1, and temperature which is T2. T2 is 400 degree Kelvin, and T1 is this one. This is T1. So this is this. So from this we will get V2 is equal to 3 decimeter cube into 400 Kelvin divided by 300 Kelvin, and this will results of V2 is equal to 4 decimeter cube. We can say V2 is equal to V2 will be equal to 4 liter or 4 decimeter cube. So this volume will be equal to 4 liter. So we have, it shows that we have the temperature, we can increase the temperature, because first temperature was 300, then we increased to 400, to due to which the volume is increased from 3 decimeter cube into 4 decimeter cube. So this is show that verify the Charle's law. Next, in the next video, we'll discuss about the liquid state. Next video. Thanks for watching.